हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पे स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो लिंक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और विभवांतर की परिभाषा देखी थी। इस वीडियो लिंक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना विभव पैदा होगा। तो हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge. Due to a point charge, बिंदुवत आवेश के द्वारा उत्पन्न हुआ विभव कितना होगा। कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q consider a positive point charge Q placed at the origin O, to calculate its electric potential. Electric potential at a point P, distant small r from origin. The electric by the definition the electric potential due to source charge at point P will be equal to amount of work done, in bringing a unit positive charge from infinity to the point P. From infinity to the point P. किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत किसी पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट is placed at point A, at a distance x from
x from origin O by Coulomb's law. The electrostatic force acting on charge Q naught is acting on charge Q naught is F equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon x स्क्वायर। क्योंकि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि दो बिंदुवत आवेश जो स्थिर हैं उनके बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपातिक होता है। और दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। Here the force F vector acts away from charge Q, The small work done in moving the test charge Q naught from point A to B through small displacement dx vector against the electrostatic force is small work dw, that is equal to F vector dot ds vector, and it becomes F dx cos 180, that is minus F dx. Then the total work done in moving, charge Q naught from infinite to the point P will be W equal integral dW, and it becomes minus F dx, लोअर लिमिट इनफाइनाइट से हम कहाँ पे ले आएंगे, R पे ले आएंगे।
तो ये हो जाएगी माइनस इंटीग्रल लोअर लिमिट इनफाइनाइट 2 point r and f becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon r upon x square और into क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो w becomes minus 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught and minus x square हो गया 1 upon x square dx. W becomes minus 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught x raised to power minus 2 dx. W becomes minus 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught and x minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 and limits become infinite to r. It becomes w minus 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught and it becomes x minus 1 upon minus 1. Then w becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught or into x raised to power minus 1. It becomes w 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon क्या हो गया x हो गया। अब हमारा जो है पोटेंशियल जो होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट चार्ज Now the definition of potential will be definition of potential will be force total work done by a system on the unit test charge to carry it from infinite to a fixed point in the electric field of a source charge at point P, which is distant from which is r distance from source charge. Then V becomes W upon Q naught and it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon
क्या हो गया R और इंटू 1/Q0, Q0 से Q0 गया, V इक्वल W/Q0 1/4πε0 Q/R. Thus, electric potential due to a point charge. Thus, electric potential due to a point charge at in an electric field in an electric field due to a point charge is spherically symmetrical. Due to a point charge is spherically symmetrical as it develops only on the distance of the observation point from the charge and not on the direction of that point with respect to the point charge. Moreover, we note that the potential at infinity is 0. Potential at infinity is 0. Now we will see electric potential due to a dipole. So friends, this link I will describe in my next video. So wait for my next video.